अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं ज़रा ऑफ था, काम ऑफिस के काम में काफ़ी मसरूफ़ था, थोड़ी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो ये देखें बाबा जो है इस वक्त बिल्डिंग के बाहर हैं, इन्होंने लाइटें वाइटें ऑन कर दी हैं और मैं वेट कर रहा हूँ जमील भाई और ताहुर का, और अजान हो गई है। तो जैसे जमील भाई ताहुर आते हैं आप लोगों से मिलते हैं दोबारा और बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं MDL BEAST कॉन्सर्ट में। 4-5 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, बहुत मसरूफियत थी जैसा कि आप लोगों को बताए। इस वक्त हम मदीना हाईवे पे निकले, जा मदीना नहीं रहे, जा तो हम शैतानी काम करने जा रहे हैं कॉन्सर्ट में, और वहाँ पे डन होना है। जमील भाई ने मुजरे की तैयारी कर ली है और टावर भाई ऑफिस से डायरेक्ट आए हुए हैं। और गाइस आपसे इधर से व्लॉग तो इधर से शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह। और दूसरी बात आपको घर जाके बताएंगे, सरप्राइज था कितने दिनों पहले हमने बोला, बस उसी चक्कर में बिजी थे। उसी चक्कर में बिजी थे। सरप्राइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काशान भाई के लिए, मेरे लिए, फाद भाई के लिए, तावर भाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर जाके वो सरप्राइज आपके सामने रखेंगे। अभी मिलते हैं MDL BEAST पहुंच के। वेलकम बैक जनाब। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मिडिल बीस्ट की पार्किंग में। ये जमील भाई फुल ज़बरदस्त माहौल में रेडी हैं, पीछे इन्होंने पोनी बांधी हुई है, नीचे जैकेट लटकाई हुई है और जब तावर से ये तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो चलें बस हम लोग अंदर चलते हैं। ये आपको सामने सैंडस्टॉर्म वो नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा एरिया है ये। पार्किंग जनरल पार्किंग का प्लॉट नंबर 6 है, स्लॉट नंबर 6 है। यहाँ से हमने जाना है, तकरीबन कोई आधे घंटे की वॉक करनी है हमने। ये वॉक करेंगे और जमील भाई इसी बहाने शायद उनका वेट कम हो जाए। फवाद हमारा अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से अंदर पहुँचते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अंदर पहुँच के। ये स्नैप पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मिलते हैं अंदर पहुँच के। World famous artists explore the cuisine from burgers to upscale bites. Experience the local street art, shop, and much more. Remember to stay hydrated and have a beast of a time. Please be sure to have your valid mobile ticket ready. All bags are subject to inspection by security personnel. इस वक्त हम लोग अंदर आ चुके हैं, टिकट स्कैन हो चुके हैं और दोनों भाई नज़र नहीं आ रहे हैं। अंदर बिल्कुल जो है वो कॉन्सर्ट का माहौल स्टार्ट है, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आगे जा रहे हैं। बस जल्दी जल्दी हम अंदर पहुंचते हैं, फवाद से मिलते हैं और आप लोगों से भी मिलते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place. इस वक्त हम लोग अंदर आ चुके हैं, फवाद को बस वेट कर रहे हैं। जमील भाई अपने काम में मशगूल थे, अभी फ्री हुए हैं। ताहुर भी हमारे साथ है। थोड़ी देर के लिए ये सामने खामोशी हुई है तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉइस भी। फाइनली फवाद हमें मिल चुके हैं। फवाद एक दूसरे हमारे फ्रेंड हैं, उनके साथ आए थे। इस वक्त हम वेट कर रहे हैं। नमाज़ की वजह से जो है वो इन्होंने कॉन्सर्ट स्टॉप किया था। जैसे ही नमाज़ ख़त्म होके होगी यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो फवाद आपके पास पूरी लिस्ट रेडी है? मेरे पास पूरी लिस्ट रेडी है जो मैंने सुननी है। बस हम भी वही सुनेंगे जो आप सुनवाएंगे। है भाई? सही है, सही है।
और जमील भाई ने तो रिदम पकड़ लिया, आपने वीलॉग में पहले देखा होगा। अब बस आगे स्टार्ट का वेट कर रहे हैं दोबारा। बीच में आपको अभी आप नैन्सी एजुनाम को सुन लें और सल्वाटोर को सुन लें, अगर ये प्ले कर लें यहाँ पे। नैन्सी सब देखेंगे। You know what? We'll throw in another one so you can get a double compact. So this my town, if I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the losing fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to clone with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the losing fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just talk. बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम मेन इंक्लोजर से निकल के थोड़ा सा आगे आए थे। डिफरेंट इंक्लोजर्स जो है, डिफरेंट इन्होंने जो बेसमेंट बनाए हुए, वहाँ जाके अभी देखेंगे और कौन कौन से डीजेस परफॉर्म कर रहे हैं। और माशाल्लाह जमील भाई का डांस तो वो सुपर सुपर सुपर। इस वक्त हम लोग थक चुके हैं, तो फवाद भी बेंच पे बैठे हैं, तावर भाई नीचे है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बराबर में जमील भाई है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है, एंजॉय किया। एक ऐसी
कहते हैं इवेंट है जिसको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ रह। क्यों ताउर भाई? बिल्कुल भाई, ज़बरदस्त है ना? बिल्कुल ज़बरदस्त है। जमील भाई एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है? जमील भाई के तो आप स्टेप्स देख ही चुके होंगे पीछे, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ड्रुंग 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 चल रहा है भाई। तो चले अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम वापस आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। जमील भाई क्या हुआ था अंदर? फवाद भाई अंदर क्या हुआ था? तावर भाई माफ करो, क्या हुआ था? भाई वीलॉग में बताने के काबिल नहीं है जमील भाई, बस यही समझते हैं कि क्या हुआ होगा अंदर। तो चले यहाँ से अब हम जा रहे हैं पीछे खालिद को सुनने और इंशाल्लाह मिलते हैं वहीं पहुँच के। सही है तावर भाई? सही है फ़ोन? यस ओके। तो फाइनली जनाब फवाद, तावर, जमील भाई और मैं हम लोग जो है इवेंट को ख़त्म करके इस वक्त बाहर जा रहे हैं और बहुत रश है, अभी भी लोग आ रहे हैं। हम बाहर जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। एंजॉय किया था फवाद? आपको तो मज़ा आया होगा। थैंक यू तो बोले मुझे। थैंक यू फवाद। थैंक यू। आप भी बोल रहे हैं थैंक यू। थैंक यू फवाद भाई, शुक्रिया तावर भाई थैंक यू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद का। तो चलें इस वीलॉग को हम जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि आज का वीलॉग था MDL BEAST को कवर करने के लिए। ये हम ईस्ट गेट से वापस बाहर निकल रहे हैं। इंशाल्लाह कल एक नए वीलॉग में मुलाकात होगी। हम मिडिल बीस को यहाँ छोड़ रहे हैं और 20 अभी उठने वाला है हमारा बाहर। हमारा गेट 20 के बाहर जाके उठेगा क्योंकि अंदर जो है वो सुन के जो है कान पक चुके हैं और बस ऐसे ही मैं इस बात को कवर कर सकता था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए वीलॉग में आपसे दोबारा।